Good morning class. Today we are going to continue the second chapter of science, plants, structure and function. Okay, in the previous lesson we studied about seeds and roots, right? And in today's lesson we are going to study about stem and leaf. Okay, before moving on, I need to clarify something. In science chapters there are a lot of pictures I'm using to make you understand. Yeah, so you don't have to draw everything. In today's lesson you have to draw just 5 diagrams and I have given names to these 5 diagrams and I'll tell you when to draw them. ओके आपको सारे ड्राइंग्स नहीं करने हैं, जो ड्राइंग करने हैं उनका मैंने नंबरिंग किया हुआ है 1 से लेके 5 तक. ओके और वीडियो के दौरान मैं आपको बोलूँगा कि ये आप ड्रॉ करो. ठीक है, सारे डायग्राम्स आपको ड्रॉ नहीं करने हैं. ओके, सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फॉर टुडे इज विल बी एबल टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एंड देयर फंक्शंस. ओके, स्ट्रक्चर मीन्स पार्ट्स. ओके, हम देखेंगे कि स्टेम के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और उनका काम क्या है. ठीक है, बिफोर दैट क्विकली रिकॉल व्हाट इज ए स्टेम. स्टेम होता क्या है? ओके, सो द स्टेम इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज फाउंड अबव द ग्राउंड. ओके, स्टेम प्लांट का वो हिस्सा है जो ग्राउंड के ऊपर पाया जाता है. ओके, the second point is it grows from the plumule of a seed. In the last class we studied plumule and radicle, okay, which were the parts of seed, right? So plumule is the part of the seed which comes above ground and forms the stem. So plumule से ही stem उगता है. Okay, and the third point is it bears leaves, fruits and flowers. इसका मतलब क्या है? Bears means produce. ठीक है, बनाना. ठीक है, so fruits, leaves and flowers सब स्टेम से ही निकल के आ रहे होते हैं. ओके, नाउ लेट्स जंप इनटू व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ स्टेम. ओके, स्टेम के फंक्शंस क्या क्या है, स्टेम का काम क्या क्या होता है. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट सपोर्ट्स द प्लांट. वो प्लांट को सीधा रखता है. ओके, एज यू कैन सी इन द डायग्राम दिस इज अ स्टेम, राइट? ये एक स्टेम है. सो दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द प्लांट स्ट्रेट. Okay, the second point is it transports food and water to different parts of the plant. Okay, वो प्लांट का खाना और पानी प्लांट के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाता है. Okay, and the last is it is the storehouse of food in the plant. We know that plant food is made by leaves, but after leaves make extra food, this food is stored in the stem for later use. इसका मतलब क्या है कि लीव्स जब खाना बनाते हैं ना, जब एक्स्ट्रा खाना बन जाता है वो खाना स्टेम में जाके स्टोर हो जाता है. ठीक है, ताकि वो बाद में यूज़ हो सके. ओके, दीज आर द फंक्शंस ऑफ अ स्टेम. ओके, नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेम. स्टेम के क्या क्या हिस्से होते हैं वो हम देखेंगे, राइट? So basically stems are made up of 2 parts. Okay, they consist of nodes and internodes. Stem nodes और internodes से बने होते हैं. The region where the leaves arise is known as nodes. Plant का वो points जहाँ से leaves निकलता है उनको हम nodes बोलते हैं. As you can see in the diagram here, you have leaves coming out of this point, this point, this point and this point, right? So these points are known as what? Nodes. ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? Nodes बोलते हैं. Okay, the last point is the region between the nodes is known as internode. और internode क्या होता है फिर? दो nodes के बीच में जो जगह खाली रहती है ना, so this space between two nodes, this space between two nodes, ठीक है, these spaces are called as internode. Okay, so this is the diagram 1 which you have to draw in your notebook. Okay, you can pause the video and draw this diagram alongside the structure of a stem. Okay, with this we have completed learning about the stem. Let's move on to the next objective, which is we'll be able to identify different structures and different types of leaf. ओके, हम ढूंढ पाएंगे लीफ के कौन कौन से हिस्से होते हैं. ठीक है, और लीफ किस किस प्रकार के होते हैं. ठीक है, किस किस टाइप के होते हैं. ओके, बिफोर दैट लेट्स क्विकली रिकैप व्हाट आर लीव्स. लीव्स होते क्या हैं वो हम जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं. लीव्स आर ग्रीन थिन फ्लैट ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स.
लीव्स प्लांट का वो हिस्सा है जो हरे, पतले और पचके हुए होते हैं और जो फोटोसिंथेसिस के मदद से प्लांट का खाना बनाते हैं. ओके, सेकेंड पॉइंट इज इट अराइजेस एट द नोड ऑफ अ स्टेम. जो लीव्स होते हैं वो स्टेम के नोड्स से निकल के बाहर आते हैं. We studied about nodes just now. Okay, so nodes वो हिस्सा होता है जहाँ से leaves निकल के आते हैं. So leaves come out of the nodes of a stem. ठीक है, let's jump into the functions of a leaf. Leaf क्या क्या काम करता है वो हम देखते हैं. So the first thing it does is green leaves prepare food by using water, minerals and carbon dioxide in the presence of sunlight. This process is called photosynthesis. हरी पत्तियाँ प्लांट्स के लिए खाना बनाती है वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की मदद से, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट इज लीव्स रिमूव्स एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. सो इन दिस डायग्राम ऑल्सो यू कैन सी व्हेन यू जूम इन, ठीक है, लीव्स को जब जूम इन कर लेते हैं यू कैन सी ओवर हियर दिस देयर आर स्मॉल holes on the leaf. Okay, these holes are also used for breathing. ठीक है, इन holes की मदद से leaves breathe भी करते हैं और इसका second function ये होता है कि leaves के अंदर जो extra water होता है वो इन holes के through बाहर आ जाता है. This is similar to how humans sweat. ठीक है, human अपने skin से पसीना निकालते हैं, right? Similarly leaves also through their stomata they give out excess water. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन. क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसपिरेशन. ओके, यू डू नॉट हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज वी आर गोइंग टू सी द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ लीफ. लीफ के क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं. सो दीज आर डिवाइडेड इनटू टू पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट इज पार्ट्स ऑफ अ लीफ. ठीक है, द सेकेंड इज वेनेशन इन अ लीफ. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स in the next few slides. First, let's take what are the parts of a leaf. Leaf के क्या क्या parts होते हैं. So basically, leaves are divided into three main parts. Leaves तीन main हिस्सों में divide होते हैं. The first is leaf base, second is petiole, and the third is lamina. ठीक है. So the blue dot which I am making over here is known as the leaf base. इसको क्या बोलते हैं? Leaf base. The section I am drawing now, which is in purple color, is called as petiole. Okay, and the rest of the leaf is known as the lamina. ठीक है, leaf base, petiole and lamina. Now let's study about each of this. Okay, the first is what is leaf base. Leaf base क्या होता है? So as you can see over here, we have a plant. हमारे पास एक plant है. We have the stem over here and we have the leaf, right? So what is a leaf base? This is a part where the leaf is attached to the stem. Okay, in this plant also you can see that this particular point where the leaf is connected to the stem is called as leaf base. जहाँ पे leaf मेन स्टेम से कनेक्ट होगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं लीफ बेस. ओके, नाउ व्हाट इज अ पेटियोल? पेटियोल क्या है अभी? पेटियोल इज द लॉन्ग थिक स्टॉक दैट लिंक्स द लैमिना टू द स्टेम. इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस प्लांट से स्टेम और लैमिना हटा देते हैं, जो कुछ बचेगा दैट इज कॉल्ड एज petioles. Okay, we have removed the stem. Now let's remove the lamina. Lamina is the bigger part of the leaf, right? And this particular stick which you find beneath a leaf, ठीक है, लीफ के नीचे जो एक स्टिक टाइप का होता है, this part is called as petiole. Okay, now let's finally come to what is lamina. Lamina क्या होता है? So the lamina is also known as leaf blade. Okay, in your textbook it is given as leaf blade. ठीक है, उसको leaf blade भी बोलते हैं या lamina भी बोलते हैं. So what is basically is it is the green flat surface of the leaf. Okay, so basically in this plant, if you remove the stem and if you remove the petiole, that is the stick, okay, what you have is the lamina, the green flat surface. ठीक है, जो flat surface होता है leaf का, this part is called as a lamina or leaf blade.
okay, and it consists of small branched veins. ठीक है, veins क्या होते हैं अभी? So as you can see over here, the leaf has this wire like structures. leaf के ऊपर ऐसे lines बने होते हैं, okay. So these lines are called as veins. The last point is the vein that runs along the middle of the lamina is called midrib or mid vein. So as you can see here, which I have drawn in red color, okay, this fat vein, okay, which runs in the middle of the leaf is called as midrib. उसको क्या बोलते हैं? midrib बोलते हैं या फिर mid vein भी बोलते हैं, okay. Okay, now let's sum it all up, okay. जो हमने पढ़ा वो हम सब एक समराइज कर लेते हैं. हियर यू हैव योर ड्राइंग 2 जो आपको आपके नोटबुक पे बनाना है. इस ड्राइंग को आपको नोटबुक पे बनाना है. सो बेसिकली यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ओके, एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ अ लीफ. जो अभी हमने पार्ट्स पढ़े हैं लीफ के वो आपको लेबल करने हैं, ओके. यू पॉज द वीडियो एंड ट्राई आंसरिंग दिस बेस्ड ऑन व्हाट वी जस्ट लर्न, ओके. योर आंसर शुड लुक समथिंग like this, okay. You have your leaf base, okay, you have your petiole, you have your lamina over here, okay, the big part of the leaf, okay, and you have your midrib, the middle vein, and you have your smaller veins which runs through the lamina. Let's move on to the second part of plant structure, which is venation. So what is venation in leaves? venation hota kya hai? The first point is the venation is defined as the arrangement of veins on the leaves, okay. हमें पता है कि leaves के ऊपर veins होते हैं, right. ये जो lines होती हैं आप जैसे देख रहे हैं इस पत्ती पर, right, these lines are called as veins, right. Here also you have veins, right. So ये veins जो pattern या design बनाते हैं उसको हम बोलते हैं venation, ठीक है. The veins help in supporting the lamina and in the transportation of food and water. So basically veins जो होते हैं उनका यूज़ क्या होता है, okay? veins पत्ती को खड़ा रखती है, okay? veins के मदद से ही पत्ती सीधा और खड़ा रह पाता है, okay? उसको सपोर्ट देती है और वो खाना और पानी ट्रांसपोर्ट करती है. सिमिलर टू हाउ वेन्स इन आवर बॉडी कैरी ब्लड, ना अपने बॉडी में जो वेन्स होते हैं वो ब्लड कैरी करते हैं. सिमिलरली दीज वेन्स इन प्लांट्स दे कैरी फूड एंड वाटर, ओके. द लास्ट पॉइंट हियर वी हैव इज देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ वेनेशन, ठीक है. 2 टाइप के वेनेशन होते हैं, 2 टाइप के वेन पैटर्न होते हैं, एंड दोज आर रेटिकुलेट, ठीक है, एंड पैरेलल. Okay, let's see one by one what are these 2 type of venation, ठीक है. So let's first understand what is reticulate venation. Okay, in reticulate venation the veins are randomly arranged and form a complex network. इसका मतलब क्या है कि जब veins का पैटर्न बिखरा हुआ होता है और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम बोलते हैं reticulate venation. As you can see in the leaves, okay, ये जो पत्ती आपको दिख रही है, here are the veins, right. So the veins are going here and there, ये जहाँ भी जा रहे हैं, right, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं. So this type of pattern is called as reticulate venation. This type of venation is seen in rose leaves, ठीक है. रोज की पत्ती में आपको ऐसा venation या पैटर्न दिखने मिलता है, okay. Now you can pause the video and draw the drawing 3 over here, which is of reticulate venation. आपको drawing के लिए मैंने ये सिंपल डायग्राम दिया है, ओके. मूविंग ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन क्या होता है? एज यू नो, पैरेलल मीन्स स्ट्रेट लाइन्स, राइट, 2 लाइन्स विच नेवर मीट ईच अदर. सो इन पैरेलल वेनेशन द वेनलेट्स रन पैरेलल टू ईच अदर. सो जो वेन्स होते हैं ना, दे रन पैरेलल टू ईच अदर. एज यू कैन सी इन द लीफ हियर, here is one vein, here is another vein, here is another vein, here is another vein. So all these veins go parallel to each other and do not touch each other. ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे. So these type of veins and this type of pattern is known as parallel venation, ठीक है. This type of pattern is seen in banana leaves, ठीक है. बनाना के leaves में आपको ऐसा पैटर्न देखने मिलेगा. For drawing you have your drawing 4 over here. Pause the video and you can draw this leaf. With this we have completed structure of leaves, okay. Let's see the last part of today's lesson, which is what are the different types of leaves. Leaves के different types कौन से होते हैं वो हम देखेंगे, okay. So leaves are basically
of two types. Basically दो type के ही होते हैं. Okay, the first one is called as simple leaf and the second one is called as compound leaf. Here you have a drawing 5. आप ये drawing कर लेना, ठीक है. The first leaf here is a simple leaf, the second leaf here is a compound leaf. Okay, you have to draw these two leaves. This is your drawing number 5. This is the last drawing for the lesson. Okay, now let's understand what is a simple leaf, then we'll understand what is a compound leaf. So basically, when a single lamina is connected to the main stem by a petiole, then it is said to be a simple leaf. Okay, if you come to the photo over here, you have your lamina over here, right, and it's connected to the main stem. Main stem is this, right? It is connected to the main stem through a petiole. Okay, when one lamina is connected to the main stem through a petiole, we call it a simple leaf. एक lamina ही connect होगा directly to the main stem, then we call it as a simple leaf. Now let's see what are compound leaves then. Compound leaves क्या होते हैं? So as you can see in the diagram here also, when two or more laminas are connected to the main stem by a petiole, then it's said to be a compound leaf. Okay, two or more laminas. So as you can see over here, there are many laminas over here. This is one lamina, this is one lamina, this is a lamina, this, right? So there are several laminas. Okay, we have your petiole over here, we have your main stem over here. So as you can see here, that there are more than 2 laminas connected to the main stem by a petiole. इधर पे बहुत सारे छोटे छोटे laminas main stem के साथ connected हैं. Okay, and these small laminas are also called as leaflet. इन small laminas को क्या बोलते हैं? Leaflet बोलते हैं. को leaf नहीं बोलते हैं, leaflet बोलते हैं. Okay, and this whole thing is called as a compound leaf. इस पूरे चीज़ को हम बोलते हैं compound leaf. So basically, simple leaf means one lamina connected to the main stem. Compound leaf means many laminas connected to the main stem. Simple leaf में एक ही lamina connected रहेगा main stem से, ठीक है, और compound leaf में बहुत सारे laminas connected रहेंगे main stem से, ठीक है. With this, let's come to an exercise. Okay, in this you've been given 6 different types of leaves and you have to identify if the following leaves are simple or compound leaf. आपको ये बताना है कि ये leaves simple है कि compound leaves है. Okay, pause the video and try to guess the answer. Your answer would look something like this. The first 3 leaves, okay, A, B, C, are simple leaf. Okay, and the last 3 leaves D, E, F are compound leaves. Okay, A, B are pretty simple. As you can see, there is no doubt these are simple leaf. You have one lamina connected to a petiole, right, and this is getting connected to the main stem. In leaf C, this is a little complicated. As you can see, there are gaps in between this leaf. Okay, but even though there are gaps in between, this leaf is not separated. ये leaf अलग नहीं हो रहा है, right? There are holes in it, but this does not mean there are different laminas over here. ये अलग अलग lamina नहीं है. But in D, E and F, as you can see, there are many small laminas connected to the petiole. Petiole के साथ अलग अलग lamina connected हुए हैं. It's not one lamina but many laminas, right? So D, E, F leaves are compound leaves and A, B, C leaves are simple leaves. Here is an exercise for you. What you have to do is you have to look near your house and find leaves of 2-3 different plants and fill the table. Okay, आप अपने घर के आसपास देखो और 2-3 अलग अलग तरह के leaves उठा लो और ये table fill करो. For example, I took a rose leaf, so you have to write the name of the plant as rose, right, and you have to write is it simple or is it compound leaf, और आपको venation बताना है is it reticulate या parallel. So similarly you have to do for 2 or 3 different plants. Okay, lastly you have your individual work time. Level 1, level 2, level 3 again. So level 1 is fill in the blanks, level 2 is true and false. If false, write the correct answer. अगर false है तभी correct answer लिखो. And the last is level 3. Here you have to answer these 2 questions. The first question is,
Why are stems in young plants green in color but as they grow old they turn brown? जो young plants होते हैं उसमें जो stem होता है वो green color का होता है, लेकिन जैसे ही वो aged बन जाते हैं उनका color brown में convert हो जाता है. So why is this happening? ये आपको ये बताना है. The second question is what is the purpose of veins in a leaf? Leaf में veins का purpose क्या है, काम क्या है, आपको ये बताना. This we have completed today's objectives. I hope you are able to understand. If any doubt, please reach out to me. Thank you.